ki jai. Thank you for coming. You have come for the Sunday program. We're very happy that you have come today. So today, You want table manners? huh? No. We are very fortunate to be gathered here in front of Radha Govinda and Jai Jagannath, Baladev and Subhadra. So we are very lucky in this world that we have an opportunity to take darshan of Thakurji. And by taking darshan of Thakurji, we become blessed. And we make progress in our spiritual life. Hey! Hello! Oh, शांत रहो भैया। बोलो महाराज शांत 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 Get a seat for Maharaj. Maharaj, I read you the Darshan means to have the intimate view of the Lord. An exclusive and intimate view of Krishna. Intimate meaning with the realization of your eternal spiritual form and your eternal spiritual relationship. This is darshan. So when we come and we see Thakurji, depending on our consciousness, we will get darshan or we will not get darshan. For some people, we are seeing only marble or wood. But for other people, we are seeing, oh, this is actually Krishna. It is not different from Krishna. That person is getting darshan. He sees that the Thakurji, the image of Thakurji is non-different from Thakurji. The image of Krishna is non-different from Krishna. Then, he is getting darshan. He is seeing. We should not try so hard to see Krishna. We should try to behave in such a way that Krishna sees us. Then, when Krishna sees fit, he will give us darshan. He will allow us to see him as he is. Then we will make advancement in our spiritual life. So, it is very fortunate for you to come to the temple and see the deity. Now you have to take advantage of that by seeing the deity in the proper light. Unlike other ancient
ancient religious and spiritual groups, these are not idols. They are not created from the fanciful imagination of man. But there is direct descriptions in the Shastra that Krishna looks like this. He has this kind of form, this color, complexion, these kind of eyes, this kind of hands. Everything is described. And the artists who paint these pictures and make these deities do so under the guidance of the acharyas and great personalities like Lord Brahma, Lord Shiva, etc., who are describing the form of Krishna. Sukadeva Goswami, Sutta Goswami, they are describing the form of Krishna, and we are hearing that, and the artist is basing his work on these descriptions, not on his imagination. So it is not an idol. It has life. Why does the deity have life? Because the deity, Krishna and his form are non-different. They are eternal. There is one Leela in Odisha. In Odisha there is one Leela of a Brahmin. Initially, this young Brahmin was living in Vrindavan, and an elderly Brahmin from Odisha came to Vrindavan for parikram. So the young Brahmin took him everywhere on the parikram. And after the young Brahmin took him everywhere on the parikram, then the older Brahmin said, "You are a very nice young man. You are just suitable to be the husband of my daughter. I want to arrange the marriage of you to my daughter so that she has a good Brahmin husband." So the Brahmin said, "Okay, if you want to make this pledge, you should do it in front of one Thakurji, in front of Gopal." So there was one very big Gopal deity in Vrindavan. And in front of that Gopal deity, the elderly Brahmin promised, "I will give my daughter's hand in marriage to this young Brahmin, whose name is such and such." And this way it was arranged for the young Brahmin to get the hand of the elderly Brahmin's daughter in marriage. So then this deity became called Shakshi Gopal. Shakshi means witness. He was the witness of the vows. So later, what happened? When the young Brahmin went to see the elderly Brahmin's family in Odisha, the sons of the Brahmin, the brothers of the daughter, they didn't agree. Why this young Brahmin should marry our sister? He's not qualified. We don't want him. So he told them, "But your father has already made the promise." Where is the promise in writing? No, it was done in front of the deity. The deity is given witness. You bring that deity here, the deity should tell us. So he went to see the deity in Vrindavan, and he asked the deity, "Can you come and confirm to the family of the elderly Brahmin that he has given his daughter's hand in marriage to me?" So the deity said, "Yes, I will go to Odisha. But you cannot watch me walk. I will walk behind you, but you cannot watch me walk. If you turn to look at me, I will stop wherever you turn, and I will not walk any further." So then the young Brahmin said, "Well, how will I know that you are following me?" He said, "Because my ankle bells, they will tingle as I'm walking. So when you hear the ankle bells tingling, you know that I'm walking behind you." Okay, I agree. So when they reached Odisha and they were getting
near to Jagannath Puri, where the elderly Brahmin lived, he could not hear the ankle bells ringing anymore. So he stopped, and he turned, and the deity was there, but he wouldn't walk any further. He said, "You bring the family here, I will give witness from here." So he did that. He went and got the family, and the family could see it was not possible for him to carry this deity from Vrindavan by himself, because it was a very big deity, bigger than a human being. So they agreed to give the daughter's hand in marriage. And so this deity became known as Shakshi Gopal, the Gopal who is the witness. So we see here from this pastime, this lila, that land keeps falling down. So we understand from this lila that the deity was talking to the Brahmin himself. The deity was walking. The deity was talking. The deity is Krishna. There is no difference between Krishna and the Thakurji. They are same. One and the same. There is another pastime of Jad Bharat. In the pastime of Jad Bharat, we see that some dacoits took Jad Bharat to the place to kill him, offer him in sacrifice to the deity of Durga. And Durga became very angry. She did not want that a human being should be sacrificed to her. This was unacceptable. So, the deity exploded, and Durga manifests herself there. So there was a difference between Durga and the deity. Durga and the deity were not the same. Durga was separate. She was giving power to that deity from a distance. So this proves that the deity of the demigod is different from the demigod. But the deity of Krishna is the same as Krishna. So then Durga, she stopped them from performing this yaga, this sacrifice, killing Jad Bharat. And we understand from this that Durga and the deity of Durga are not the same, they're not one, they're different. And Krishna and the deity of Krishna are one, they are the same. So this should be understood. When you are looking at Govinda, you are looking at Krishna. There is no difference between the deity and Krishna. It is the same. The only difference is our eyes, our inability to see properly that this is actually Krishna, that Jagannath is actually Krishna, that Balaram is actually Krishna. It is the defect of our vision that we cannot see properly. It has nothing to do with anything else. So to see, to have that vision, Premanchurita Bhakti Vilochanena, one must have bhakti. When you have bhakti, Premanchurita, when you have prema, Premanchurita Bhakti Vilochanena, Sadaiva Radayeshu Vilokayanti Yamashama Sundara Chinte Gunasvarupam. Then you can see. Yes, then you can see Thakurji. Then you actually have the vision, the provision of prema. By that vision of prema, you can see the form of Thakurji. Otherwise, it's not possible. Prema gives you vision, gives you drishti. Drishti comes from prema. And prema will give you the drishti. It's called divya drishti, divine vision. Then you will be able to see the Krishna, Thakurji as Krishna himself.
You will not be in illusion and think there is a difference between the deity and Krishna. You will understand the reality that Krishna and the deity are the same. Then you will make advancement in your spiritual life. So, you are fortunate to come here today to get a vision of Govinda and Jagannath, and now you should pray for Divya Drishti, that you may actually see that Govinda and Jagannath are not different from Krishna, that they are Krishna himself, and then you will have darshan, real darshan. You will have prema darshan. Then you will make advancement in your spiritual life. Okay. How can you do that? By chanting. Every day chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare. By this chanting, then you purify your chitta, your contaminated consciousness. Then, with pure consciousness, you will see everything from spiritual perspective. Otherwise, you cannot see properly. Understand? Are you chanting every day? Hare Krishna? Huh? You chanting? You chanting? Yes, you. Hare Rama, Rama Rama. Chant ulta. Hare Krishna, Krishna Krishna. Very good. Thank you for chanting. This is the school here. There is one ashram. Orphanage. This group from Sandi Maharaj? No, it is nearby here. Nearby. See, one lady is there. She takes care. Who is in charge? She's there. Okay. She brings them here on Sunday? Today, first time. First time. We generally give prasad to them every something. Okay. Very nice. Thank you for coming. Okay. So now we're going to have Arti. Take 10-15 minutes. Want to speak something about 10-15 minutes. Want to glorify Maharaj? Huh? Want to glorify Sant Maharaj? इससे पहले आप अपने को मत संत मानो. You want? He should say to the right. I only met him one time for 5 minutes. I आप don't करोगे? really know him. आप बोलेंगे? Let him speak. He should speak. Because he didn't speak, and I don't know. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. तो आज भक्ति सिद्धांत के लास्ट का डिसाइडर संत कुमार गोस्वामी महाराज का अप्रगट का अर्थ होता है वो एक जगह से दूसरी जगह चलेगा. ये भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के लास्ट डिसाइडर है. ऐसे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के अनेक शिष्य हुए हैं. भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी को मंगला प्रसाद कहा जाता था. भक्ति विनोद ठाकुर के वो पुत्र हैं. गौर किशोर दास बाबा महाराज महाभारत हैं. उनका पूरी जगन्नाथपुरी में जन्म है. नारायण शाखा के पास जब भक्ति विनोद ठाकुर रहा करते थे, सप्तम गोस्वामी गौड़िया में भक्ति विनोद ठाकुर की है. ये भक्ति भगीरथ जो गौड़ीय परंपरा है, भक्ति भगीरथ मतलब
विनोद ठाकुर द्वारा अविरल चलने वाली धारा है। उसकी ब्रांच इस्कॉन है, जो स्वामी प्रभुपाद ने अमेरिका में लॉस एंजल्स में स्थापना की। लेकिन तब वो सन्यासी नहीं थे। स्वामी प्रभुपाद 1957 में सन्यास लिए। राधा दामोदर में एक छोटा सा, ऐसे तो दिल्ली में भी गए थे स्वामी प्रभुपाद, क्योंकि उनको सनस्ट्रोक हो गया था। एक कैफे हाउस है दिल्ली में जहाँ गिर गए बेशुद्ध होके। तो वहाँ एक सरदार जी थे जिन्होंने उनको अपने होटल में लेके जाके रखा। वहां से फिर गुजरात में जाके छोड़ा। ये इतिहास है, इस्कॉन बनने से पहले की बात है, जब वो वानप्रस्थ अपने दामोदर में कष्ट उठाते थे। तो स्वामी प्रभुपाद चिट्टीवाड़ा में भी रहे दिल्ली में। स्वामी प्रभुपाद जी जब हमारे जो युगाचार्य नारायण गोस्वामी जो हम कहते हैं, जिनसे महाराज जी ने संन्यास लिया, इन्होंने जाके स्वामी प्रभुपाद को बुला के केशव गौड़ी मठ में मथुरा में लाए। और तब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद शरीर से नहीं थे और उनसे संन्यास लिखवाया। संत कुमुद महाराज, इनका ब्रह्मचारी का नाम था राधारमण प्रभु। ये बहुत, मैं जब मायापुर में था तो भक्ति विनोद इंस्टीट्यूट पर योग हुई, जहाँ भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का शरीर रखा है, उसके बगल में ही इनका आश्रम है और एक नया आश्रम खुला है आगे से। तो इनका आविर्भाव में गया था। तो जब मैं मायापुर में गया था तो एक तेलुगु डिवोटी के साथ संत कुमुद महाराज, बहुत उम्र था, बहुत बुजुर्ग थे और बेड में हमेशा ऐसे पड़े, व्हील चेयर टाइप ऐसे लंबा वाला, तो वो बेड में रहते थे। तो हम चरण में जाके बैठते थे, क्योंकि अंतिम उनका हमने दर्शन किया है संत कुमुद महाराज। तो बाकी तो ऐसे महाराज जी ने बहुत सारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के शिष्यों को, लेकिन हमने एक दो चार उनके किए। तो मैंने संत कुमुद महाराज जी का दर्शन किया, लेकिन वो अंतिम स्थिति में थे, मतलब बहुत बुजुर्ग थे। लेकिन एक बात है, एक दो तेलुगु उनकी पर्सनल सेवा करते थे और नीचे में थे, योग पीठ से थोड़ा पीछे से उनका आश्रम है और इंस्टीट्यूट है तो पीछे लिखा है और उसके आगे। तो मैंने जो ये है कि प्रभुपाद के अनेक शिष्यों के ऐसे अतिमत चरित्र है, क्योंकि स्वामी प्रभुपाद को भी ऐसे 2-3 बार सपने में भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद आए थे और बोले थे कि तुम सन्यास लो, लेकिन तब भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद शरीर से नहीं थे। और इसीलिए हमारे जो गुरु जी नारायण महाराज ने युगाचार्य जो है, कलयुग 4,32,000 साल की तो सिर्फ शुरुआत है, 5,000 साल हुए हैं तो उससे कम महाभारत ये प्रथम चरण है। तो नारायण महाराज जी बोले चलो तुम संन्यास ले लो, और लेके गए मथुरा। तो जहाँ तक हो सके, अभी महाराज की कथा बता रहे थे साक्षी गोपाल और चैतन्य महाप्रभु विप्र रूपो वर्ण विप्र सूत्र, ब्राह्मण परिवार में जरूर उनके जगन्नाथ मिश्र और उनकी माँ सती अद्वैताचार्य को ये वाणिज्य ब्राह्मण परिवार से, नित्यानंद प्रभु गाड़ी ब्राह्मण, गदाधर पंडित। इस प्रकार से हमारा भगवान गो और ब्राह्मण इसको बहुत प्रेम करते। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। गोविंद भगवान, हमारा सनातन धर्म में गाय और ब्राह्मण का बड़ा महत्व है।
इनकी रक्षा इनका हित चाहे सामाजिक करे, सरकार करे, पर्सनली अपने से होता है तो करना चाहिए। तो हमारा धर्म का रिगार्डिंग ब्राह्मण होता है। तो अभी इन्होंने बताया, देखिए स्वयं भगवान जगन्नाथ कहाँ वृंदावन, उस वक्त तो जंगल रहते थे। आजकल ऐसा नहीं है कि ट्रेन में बैठ गए 2 दिन में जगन्नाथपुरी पहुंच गए। कोई पूरी ओकापुरी या गुजरात से लगी या यहाँ से तिरुपति पुरी लाती है, ऐसा कोई भी ऐसा नहीं था। बहुत जंगल रहा करता था। तो ये छोटा जो ब्राह्मण है उसके साक्षी देने के लिए स्वयं गांव वाले बोले, अरे इसको गरीब भिखारी ब्राह्मण सुधा पता नहीं कहाँ से आया, बोलता है कि इतनी बड़ी लड़की शादी करेगा और ये छल कपट कर रहा है। तो स्वयं भगवान चल गया और साक्षी देने के लिए स्वयं भगवान। तो इस प्रकार से अनेक इतिहास है। मानवेंद्र परिवार के लिए पुजारी के सपने में आए, बोले कि मेरा एक यति ब्राह्मण बाहर बैठा है और भूखा, और मैंने छोटा सा लोटा खीर चोरी करके रखा हूँ, उसको गांव के बाहर है। कहाँ है? बहुत दूर। और मुस्लिम लोगों ने बहुत मंदिर तोड़े, बहुत अत्याचार किए। तो उस वक्त का ब्राह्मण के गोविंद जी कृष्ण गोपाल जी को उठा के वृंदावन से बाहर जा रहा है, कहाँ? छुपाने के लिए उसको। तो जाते जाते राजस्थान बॉर्डर आ गया, तो डीग बोल के एक जगह है। तो उसने क्या किया, गड्ढा खोदा पड़ा, बहुत बड़ा गड्ढा, और उसके अंदर गोपाल पड़ा। क्या किया, और ऊपर से काटे होते ना, झाड़ी से काट के सब उस पर डाल कर क्या कर दिया। तो मुगलों से तो बचा दिया, मदन मोहन जी को वहां से लाया, गोपाल जी को लाया। लेकिन हुआ क्या, ये जो यति ब्राह्मण माधवेंद्रपुरी, हमारी जो परंपरा में हम कहते हैं माधवेंद्रपुरी व ईश्वरपुरी के धन्य करी श्री चैतन्य जगत गुरु महाप्रभु, है कि नहीं? तो ईश्वरपुरी के भी गुरु थे माधवेंद्र, उनको महाप्रभु अपने दादा गुरु के रूप में पूजा करते मानते थे। तो ये माधवेंद्रपुरी बात को वहां स्वप्न दिया जगन्नाथपुरी में। भगवान ने बोला, देखो मेरे को यहाँ वृंदावन का जो बॉर्डर है, राजस्थान लगता है, गिरिराज कराहट के से और आगे जाके डीग बोलते हैं। यहाँ पर मैं जंगल में कांटे की झाड़ी में हूँ और मैं गर्मी से बहुत तप्त से दहला रहा हूँ, मुझे कृपा करके चंदन ले आना। और माधवेंद्रपुरी बात को वहां स्वप्न दिया। माधवेंद्रपुरी को पूछा कि मैं वृद्ध हूँ, मैं कैसे आऊँ वहां? तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप वहीं गोपीनाथ जी को लगा। भगवान क्या बोले, गोपाल गोपीनाथ और मेरे में कोई अंतर? आप गोपीनाथ जी को चंदन लगा तो मुझे मिल जाएगा। और सच्ची में उसने लगाया और वो गोपीनाथ यहाँ उनका जहाँ गर्मी सब खत्म हो गई। और फिर पहली बार आके उन्होंने अन्नकूट महोत्सव किया विराट कला के गोपाल जी। बोलो विराट महाराज की, गोपाल जी की, गोपाल की, गोपाल की। तो भगवान भक्त के लिए लीला करते हैं, सेवा देते हैं, लेकिन भक्त भी भगवान के लिए ही करते हैं। और 24 घंटा गुजारते हैं, भगवान रात्रि दिन भक्त की सेवा में तत्पर रहते हैं। और भगवान का जो स्वयं भक्त है तो भगवान के लिए, इसलिए कहा या निशा सर्वभूतानां जागृति संयमी सा निशा भक्तों में। जो साधु संत होते हैं, जो भगवान के विभिन्न हरि भक्त होते हैं, और हर पल हर क्षण राधा रूप गोस्वामी बात कहते हैं लव मात्र, लव मतलब आप आंख में सकते हैं कितना टाइम लगता है आपको पता ही नहीं है। तो उससे भी कम समय भी व्यर्थ नहीं करवा, उनको उसको सब
भगवान को भक्त छोड़ के बोलते नाहम प्रकाश वैकुंठे योगी नाम अपनी हृदय मत गत्या जहाँ मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में रहता, मैं जब कभी ध्यानी मेरा जहाँ भक्त है वहाँ रहता। इस प्रकार से तो आज अप्रकट तिरोभाव, तिरो मतलब क्या है? विरह महोत्सव। सतकुमार महाराज का विरह, विरह का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट रूपेण रह, रह मतलब है। जो संत होते हैं ऐसे भी अपना मानता नहीं कोई, शरीर तो कभी हमेशा हमारा ही बदलता ही रहता है, इसका कोई कभी किसी का शरीर हमेशा वैसा रहेगा ये संभव नहीं है, चाहे हरिभक्त हो, योग्य हो, जो भी हो, लेकिन पल पल शरीर बदल रहा है, लेकिन आत्मा और हरिभक्त हमेशा। तो इसलिए आज सबसे तिरुभावी में हम भगवान के श्रीभ्यो नमो नमः। पुष्पांजलि।